Is the screen visible? Yeah, it's visible. सही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सो हम कंटिन्यू करते हैं जो हमने पिछली क्लास में छोड़ा था सो वी टॉक्ड अबाउट डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस अनलिंक्ड जीन्स हमने उसके एग्जांपल्स किए थे और हमने टेस्ट क्रॉसेस के बारे में पढ़ा था नाउ वी गोना स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ epistasis or epistasis the way any way you could pronounce it epistasis अब ये एक कंडीशन आई वुडंट कॉल दिस अ कंडीशन दिस इज अ कंसेप्ट व्हिच यू नीड टू रिमेंबर अब एपिस्टेसिस का कंसेप्ट जो है दिस मेनली कम्स अप व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द फैक्ट दैट डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है इज टेकिंग प्लेस तो मतलब एज सून एज यू सी अ क्वेश्चन वेयरइन दो जीन्स की इनहेरिटेंस की बात हो रही है एपिस्टेसिस could or could not play a role in helping you to solve that question अब epistasis जो है can occur in both unlinked genes and it can also occur in linked genes मतलब the question would be talking about दो genes की inheritance which are on different homologous pair of chromosomes और same homologous pair of chromosomes does not matter epistasis दोनों में possible हो सकता है okay let's start by understanding what is this actually सपोज हम एक रैंडम सिचुएशन के बारे में सोचते हैं सो वट एवर द एग्जाम्पल्स विच वी हैव बीन डूइंग अर्लियर लेट्स पिक आउट वन ऑफ दोस एग्जाम्पल्स सो लेट्स से आई हैव अ जीन सो द फर्स्ट जीन क्योंकि डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस है सो आई एम गोना हैव टू जीन्स द फर्स्ट जीन कोड्स फॉर बॉडी कलर इस जीन के दो एलील्स हैं कैपिटल बी एंड स्मॉल बी एंड द सेकंड जीन कोड्स फॉर बॉडी शेप और इसके भी दो एलील्स हैं एक कैपिटल बी एक कैपिटल टी एलील है सॉरी और एक स्मॉल टी एलील है अब for this question I'm going to let you know कि this is the topic of unlinked genes so we're going to start with unlinked genes and then we'll move on to linked genes तो मतलब यहाँ पे I'm going to have two pairs of homologous chromosomes जिसमें हमारे जो दो genes हैं वो present होंगे okay so this is the first gene this is the first gene this is the second and this is the second now let me ask you this gene and this gene, would you call these as two genes or would you call this as one gene? Two What would you genes. call it? Okay, so हम genes की definition हमने क्या लिखी थी chapter के शुरू में? What was the definition we used? That what are genes actually? They were basically a sequence of nucleotide bases on DNA, Okay, and and they code for a particular polypeptide. okay, right, बिल्कुल सही. And inside the homologous chromosome का pair, gene जो position acquire करता था, उस position का नाम क्या होता था? Could you repeat? So inside the homologous chromosome, gene जो position acquire करता था, what was the name of this position? There was a specific word we used, right? Loci, remember? Yeah. Yeah, so loci का word हम generally use करते हैं whenever we are talking about the gene की position. अब दो genes को हम आपस में differentiate कैसे करेंगे? Either by the definition you said कि क्योंकि वो different polypeptide genes के लिए कोड कर रहे हैं या number two वो different loci पर present है. If you have two alleles जो कि एक ही loci पर present है, wouldn't they be the same gene but different alleles? Because they code for the same characteristic, correct? Which is body color. Yeah. So these two are two alleles, not two genes. You would call this as one gene having two alleles. Same case यहाँ पे one gene having two alleles. लेकिन अगर मैं इसे और इसे कंपेयर करता हूँ, these are now two genes क्योंकि ये दो different gene की positions acquire करते हैं. So in this example right here, I have two genes which are coding for how many phenotypes? The first gene. नहीं नहीं जो दो genes हैं
Are they coding for two different phenotypic characteristics, जैसे body color and body shape, or yeah, are they coding for the same phenotype? Different like phenotypes. बिल्कुल 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 सही, डिफरेंट phenotype। जो पहला जीन है वो ये वाली phenotype के लिए कोड कर रहा है, बॉडी कलर विच कैन बी डोमिनेंट ट्रेट या रिसेसिव ट्रेट। दूसरा जीन दूसरी phenotypic कैरेक्टरिस्टिक के लिए कोड कर रहा है विच इज कैपिटल टी या स्मॉल टी। I should have used characteristic other than phenotype, but it almost means the same thing. This is not epistasis. Whenever you have two genes, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ whenever we have two genes, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हैं, but the two genes are coding for two phenotypes. This is normal genetics, normal inheritance. यहाँ पे कोई special case नहीं है. This is not epistasis. It's not this particular phenomena जो कि we are going to learn. क्यों? क्योंकि the two different characteristics या phenotypes have been coded by the two genes. Epistasis is where you have, now I'm going to write the definition. You have two genes, and obviously they are two because they are at different loci. So two genes at different gene loci, but they are interacting with each other. Now this is the main part. तो जो दोनों genes हैं, they are interacting with each other, affecting one phenotype. तो व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि जो दोनों जीन्स यहाँ पे हैं, इफ वी वर टू टेक एन एग्जांपल ऑफ एपिस्टेसिस, आई वुड से कि द फर्स्ट जीन कोड्स फॉर बॉडी कलर एंड द सेकंड जीन कोड्स फॉर वेदर देयर इज अ बॉडी और नॉट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एपिस्टेसिस। एंड मैं यहाँ पे एग्जांपल एक पेस्ट भी करता हूँ यहाँ पे, इफ आई कैन फाइंड इट, या दिस वन राइट हियर, लेट्स कॉपी दिस। इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो वील अंडरस्टैंड मोर ऑन व्हाट एपिस्टेसिस एक्चुअली इज। सो अगेन लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज व्हाट इज एपिस्टेसिस जो अभी तक हमने समझे। यू नीड टू हैव टू जीन्स at different loci, and these two genes are interacting with each other, affecting one phenotype. On the other hand, if you have two genes which code for two phenotypes, each gene codes for a particular phenotype, this is not epistasis. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं फॉर एग्जांपल। Now let's read this question through. इससे हमें बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी। Flowers of the common morning glory plant, this is the genus and the species of the flower, oh sorry, of the plant, can have several different phenotypes. Okay, an example of these flowers is shown. Now this is very very important. Flower color in eye purpurea. Now tell me this. Flower color, what is this? Is this genotype or is this phenotype? Phenotype. Phenotype, जल्दी से इसको लेबल कर देते हैं। So everything you can find out about the question while reading it through, always label it within the question. Not necessarily कि मैं end तक पढ़ूंगी and then you will start to label. No, as soon as you see something, just make sure that you label it through. ताकि if you read it again, it becomes easier to read. So एक phenotype के बारे में उन्होंने हमें बताया है जो कि कंट्रोल होता है by two genes on different chromosomes. You see, same phenotype, flower color, is controlled by two genes. Which type of phenomena is this? Unnamed genes. Isn't this epistasis? QK, remember, two genes controlling the same phenotype? Yeah, it is. Yeah. इस तरीके से विदाउट गिविंग एनी हिंट एग्जामिनर इज ट्राइंग टू टेल यू कि अच्छा एपिस्टेसिस का कंसेप्ट इसमें यूज होगा। सो अगर यहाँ पे कहते हैं फ्लावर कलर इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन ऑन वन क्रोमोसोम, this is normal inheritance, monohybrid or dihybrid. But if it says that the same phenotype is controlled by two genes, epistasis. Okay, आगे बढ़ते हैं। The two genes are on different chromosomes. What does this tell you? Different chromosomes, same chromosomes. What does this concept remind me of? Unlinked. Unlinked. बिल्कुल सही. Unlinked genes. Now you just read the first sentence of this question and you have three pieces of information. The phenotype is flower color. You're talking about two genes, so that's dihybrid inheritance. Two genes are coding for the same phenotype, epistasis, and dihybrid inheritance में
अनलिंक जीन की बात करते हैं। द फर्स्ट जीन कैपिटल आर स्मॉल आर कोड्स फॉर अ प्रोटीन जो कि पिगमेंट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। सो द प्रोटीन हेल्प्स टू प्रोड्यूस द पिगमेंट। और ये प्रोटीन कोड करते हैं ये दो एलील्स। डोमिनेंट एलील क्या करेगा? अलाउस पिगमेंट प्रोडक्शन। रिसेसिव एलील प्रिवेंट्स पिगमेंट प्रोडक्शन ऑफ एनी कलर, जिसकी वजह से व्हाइट फ्लावर होगा। सो दिस एलील व्हाट इट एक्चुअली डज इज इट प्रिवेंट्स दिस पिगमेंट फ्रॉम बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो जब कोई भी पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो वील गेट फ्लावर्स विच आर व्हाइट इन कलर। अच्छा, अभी जो दूसरा जीन है ये डिटरमाइन करता है कि कौन से टाइप का पिगमेंट प्रोड्यूस होगा। कैपिटल टी डोमिनेंट ट्रेट पर्पल, रिसेसिव ट्रेट रेड। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि दिस पर्टिकुलर जीन राइट है ये डिसाइड करता है इफ पिगमेंट प्रोडक्शन हैपेंस और नॉट। इफ यू वर टू समराइज के जो पहला वाला जीन है व्हाट डज इट कोड फॉर और व्हाट डज इट कंट्रोल, सो यू वुड राइट कि ये डिसाइड करता है इफ पिगमेंट प्रोडक्शन हैपेंस और नॉट। जो डोमिनेंट एलील है वो चाहेगा कि पिगमेंट प्रोडक्शन हो, अलाउज। रिसेसिव एलील प्रिवेंट करेगा। सो वी आर सिंपली जस्ट फाइंडिंग आउट क्या पिगमेंट प्रोडक्शन होती भी है या होगी ही नहीं। अब लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड जीन। ये वाला जीन क्या डिसाइड करता है? दिस जीन डिसाइड्स द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रोड्यूस्ड। Now, I want you to look at these two sentences closely. Pigment production happens or not, type of pigment produced. Aren't both of these genes talking about pigments? Yes, they are. One of the genes is talking about pigment की production, the other is talking about pigment का color. What is the bottom line? कि दोनों genes एक ही characteristic को control कर रही हैं, which is what we said earlier. Epistasis. तभी इसने कहा था कि जो phenotype है, it is controlled by two genes, this and this right here. अब let's say अगर मेरे पास एक genotype है, which is capital R, capital R, capital T, capital T. What is the color of the flower going to be? It's gonna be purple. Purple. बिल्कुल सही. Okay. Now the next question is interesting. What if the genotype of the parent is small r, capital T, capital T? What's going to be the phenotype now? White flowers. White flowers. अच्छा, why not purple flowers? ये जो capital T है या ये तो express हो रहा है इस genotype में, तो ये तो purple flowers के लिए कोड करता है. So why shouldn't the phenotype be purple? Because the recessive allele is present and it basically prevents the pigment production of any color. बिल्कुल। रिसेसिव एलील प्रिवेंट करता है पिगमेंट प्रोडक्शन। अगर पिगमेंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा, डज इट मैटर कि यहाँ पे कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो या कोई भी एलील हो? इफ द पिगमेंट इजंट इवन बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट प्लेस, डज इट मैटर कि कौन सा कलर होने वाला है पिगमेंट का? Could you repeat? I didn't understand the हाँ, question. तो व्हाट आई एम सेइंग इज ये जो स्मॉल एलील है, द रिसेसिव एलील स्मॉल आर, व्हाट इज इट कोडिंग फॉर? इट्स सेइंग और इट्स कोडिंग फॉर द फैक्ट कि इट विल प्रिवेंट पिगमेंट प्रोडक्शन। मतलब कि इफ दिस बीइंग एक्सप्रेस्ड व्हिच इट इज बीइंग एक्सप्रेस्ड, तो पिगमेंट प्रोडक्शन होगी ही नहीं। अगर पिगमेंट प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, डज इट मैटर कि पिगमेंट का कलर क्या होने वाला था? इट्स नॉट इवन बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट प्लेस। सो ये वाली जो जीन है ये कोड करती है फॉर पिगमेंट का कलर क्या होगा वंस इट इज प्रोड्यूस्ड। अगर पिगमेंट प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, डज इट मैटर कि मैं यहाँ पे कैपिटल टी लिखूँ स्मॉल टी लिखूँ? इज इट गोइंग टू अफेक्ट द फैक्ट कि पिगमेंट बनेगा ही नहीं? No, it won't affect. इट वॉन्ट। तो what we understood is that this gene is overpowering this gene. अगर मैं यहाँ स्मॉल टी लिखूँ, what's the phenotype going to be? It's still gonna be white flowers. It's still going to be white flower. So you see, this gene right here is gene ka particular combination of alleles does not really matter.
बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है विच इज दैट पिगमेंट ही नहीं बनेगा। अगर पिगमेंट ही नहीं बनेगा, इट डज नॉट मैटर कि वो कौन से कलर का बनने वाला था, इट्स नॉट बीइंग प्रोड्यूस इन द फर्स्ट प्लेस। तो दिस इज एपिस्टेसिस की दो जीन्स एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे हैं या यू कुड से अफेक्ट कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। लेट मी कॉपी दिस। So this was the description of the question, and this is the actual question. So just try this out. Complete this figure to show the results of a cross between two plants that are heterozygous at both loci. So you have to add the parent का genotype, parent के gametes, results of cross में parental gametes यहाँ पे. So it's like a Punnett cross. Parental gametes यहाँ पे, and then offspring का genotypes and phenotypes, and then the ratios. It's a big question. Just try it out. This is 5 or 4 marks. I'm not able to remember it. Do I send the picture or should I just like say it out loud like after I'm done? You could send the picture because it's gonna be difficult to understand and copy it in small amounts, you know. Actually, लिख भी Yeah. सकती हो वो. Okay.
Right. Are you done with the question? Yeah, sir, I'm just sending it. Just a second. Right. Right. So let's look at this. Okay. Right. All right. Here we see here next. Okay. So then phenotypic ratios: purple, red, and then no pigment, matlab white. 9:3:4. Okay. बिल्कुल सही. That's really good. Okay. I want you to ask something, or I want to ask you something, in fact. हमने phenotypic ratio एक पढ़ा था, and that was 9:3:3:1. ये phenotypic ratio होने के लिए what were the conditions? That basically it was between two heterozygous and in non-linked and dihybrid. बिल्कुल, hetero times hetero, unlinked genes, and then dihybrid inheritance. क्या इस क्वेश्चन में ये तीनों चीजें नहीं हो रही थी? Hetero times hetero, unlinked genes, and dihybrid inheritance? Yeah, there were. It was. तो फिर why wasn't there 9:3:3:1 का रेशियो? Why was it 9:3:4 का? सबसे पहला रीजन इसका ये है कि इस क्वेश्चन में सिर्फ तीन ही फिनोटाइप्स एक्सप्रेस होते हैं. मतलब कि यू आइदर हैव नो फिनोटाइप व्हिच इज वाइट कलर, आइदर यू हैव अ फिनोटाइप, इन दैट केस दैट्स पर्पल कलर, या अ रेड कलर. मतलब इफ द पिगमेंट इज प्रोड्यूस्ड देन पर्पल और रेड, इफ इट्स नॉट प्रोड्यूस्ड देन देयर इज वाइट. कुछ केसेस में इट्स नॉट थ्री फिनोटाइप्स ऑलवेज, कुछ केसेस में फोर फिनोटाइप्स भी एक्सप्रेस होते हैं. लेकिन इवन देन समटाइम्स द रेशियो इज नॉट 9:3:3:1, which means that there is a condition which we have to know about. There's an extra condition, and that condition is there needs to be no epistasis. इस क्वेश्चन में weren't we looking at epistasis का concept? Yeah, we were. वीवर. अब ये क्वेश्चन तो एक एक्सेप्शन है ना कि सिर्फ थ्री फिनोटाइप्स हैं, बट इवन दो इफ वी इवन हैड फोर फिनोटाइप्स हियर, इट वुड नेवर हैव बीन 9:3:3:4, क्योंकि एपिस्टेसिस की बात हो रही है. ये वाला phenotypic ratio works when these three conditions, and now you can add another condition that there is no epistasis. Once every all four of these conditions are met, that's when you 100% know 9:3:3:1 for hetero times hetero, and then 1:1:1:1 for homozygous times heterozygous. So just one thing to note down. Okay. अब एक क्वेश्चन करते हैं and then we'll move on. I have another question right here. This one, let's copy this. And I'm gonna paste it right here. This is a very small question, so just read this through and then tell me the answers. Could you थोड़ा zoom in? Yeah, thank you. Yep. Okay, for the first one, it's going to be pink, Mhm. and the second one, I think it's supposed to be green. It's supposed to be green. बिल्कुल सही. Correct. अच्छा, इसमें I'm just gonna tell you कि यहाँ पे कौन से hints थे which you were gonna pick up on while reading the question. So for example here, अगर यहाँ पे two genes लिखा हुआ है, so you would pick on the fact कि अच्छा there is dihybrid inheritance going on right here.
फिर उसके बाद it's talking about the fact कि ये two genes are on different pairs of chromosomes. तो यहाँ पे the examiner tells you कि unlinked genes का concept use हो रहा है. फिर उसके बाद the color singular मतलब एक phenotype is controlled by two genes. So ये कौन सा concept है? Epistasis. Epistasis. बिल्कुल सही. So now once you already know कि अब क्या चल रहा है इस question में dihybrid inheritance, unlinked genes, epistasis, that's when it becomes more easier to answer. And yes, you got the question right. Okay, let's move on to the next topic of this chapter, and that is dihybrid inheritance. And यहाँ पे we're gonna talk about the inheritance of two genes, but both of the genes are on the same homologous pair of chromosomes, aka we are gonna talk about linked genes. अब ये concept थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझना from unlinked, because when we start to create the genotypes and the gametes and writing down the genotypes, that's where it becomes a little difficult. But it's gonna get easier as time passes. Okay, सबसे पहला point समझने का. Let's go back to one of the words which we were looking at earlier in the chapter, autosomal linkage. हमने autosomal linkage का मतलब क्या लिखा था कि autosomal linkage refers to the inheritance of those genes that are present on the autosomes. Is that right? Yeah. Now, here's another definition for that. Autosomal means whatever we just said right now, okay, the genes are on the autosome. The word linkage, however, उसका मतलब होता है कि the genes are on the same chromosome. Whenever we say the word linkage, इसका मतलब कि genes एक ही chromosome पे. तो when we say autosomal linkage, अच्छा genes autosome पर हैं और they are on the same, और मतलब and they're on the same chromosome. So is it fine if we can use the word autosomal linkage and instead of linked genes, would that work? अगर हम उनको interchangeably use करें, or would that be wrong? We can use this word. We can, क्योंकि लिंक जीन्स का मतलब क्या होता है कि दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम के पेयर पे हैं. लिंकेज का मतलब यही होता है कि द जीन्स आर ऑन द सेम होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर. जबकि ऑटोसोमल एक्सप्लेन्स व्हाट वी वर लुकिंग एट अर्लियर कि द जीन्स आर ऑन द ऑटोसोम, एंड ऑटोसोमल इनहेरिटेंस का मतलब द इनहेरिटेंस ऑफ द जीन्स व्हिच आर ऑन द ऑटोसोम्स. तो इन द एग्जाम क्वेश्चंस माइट कम अप एज फॉर एग्जांपल जीन्स 1 and 2 are linked. Either they can straight up give it to you कि genes 1 और 2 जो हैं वो linked हैं. Then you know कि linked genes का concept use होने वाला है. Or they could say कि genes 1 and 2 exhibit autosomal linkage, which technically means कि ये linked genes की बात हो रही है, and specifically वो वाले genes जो autosome में present होते हैं. Autosome again are those chromosomes which are not sex chromosomes. So exhibit autosomal linkage. Right. अब देखते हैं on how do we write the genotype for linked genes. For example, we take two genes. सबसे पहला वाला gene जो है, this codes for, let me write this here, gene 1 codes for body color. And यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों genes need to code for the same phenotype. That's epistasis. Linked genes में there's nothing like that. Unlinked maybe there was nothing like that. So you can have two genes coding for two phenotypes. कोई मसला नहीं है. So gene 1, let's say this codes for body color. अब इस gene के दो alleles हैं, capital B and small b. Now we have gene 2, which codes for body shape. इसके दो एलील्स हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. अब अगर हमें पेरेंट का जीनोटाइप लिखना होता इन द केस ऑफ अनलिंक्ड जीन्स, तो हम कैसे लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल टी स्मॉल टी. सो व्हाट वी वुड डू इज वी वुड राइट टू एलील्स ईच फॉर एवरी जीन. इज दैट राइट? हम दो एलील्स लिखते हैं फॉर एवरी जीन. या Yeah. In the case of linked genes, however, हम इस तरीके से नहीं लिखते. We use brackets. And the reason we use brackets is to indicate कि, for example, let me draw an example right here of a chromosome.
This is one chromosome, this is another. So this is one homologous pair of chromosomes. This is capital B, this is small b, this is capital T, this is small t. पेरेंट का जीनोटाइप हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कैपिटल बी कैपिटल टी, स्मॉल बी स्मॉल टी. द रीजन वी राइट इट लाइक दिस इज, सबसे पहले लेट्स लुक एट, हम ब्रैकेट्स को यूज करते हैं. ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं बताने के लिए कि ये जो दो एलील्स हैं, ये जो दो जीन्स हैं, ये कौन से क्रोमोसोम पर हैं. तो सबसे पहला वाला क्रोमोसोम के लिए हमने एक ब्रैकेट यूज किया, कैपिटल बी कैपिटल टी. दूसरे क्रोमोसोम के लिए हमने एक ब्रैकेट यूज किया, स्मॉल बी स्मॉल टी. सो वी डू नॉट राइट इट टुगेदर बट इंस्टेड वी यूज ब्रैकेट्स, कि हमें दिखाना है कि जो ये दोनों एलील्स हैं ये एक क्रोमोसोम से बिलोंग करते हैं और ये दूसरे दूसरे क्रोमोसोम से बिलोंग करते हैं. सो टेक्निकली व्हाट वी आर शोइंग इज, we are showing the differentiation between the two chromosomes in the pair. Does that make sense? Yeah, it does. Yeah. So this is basically हम genotype इस तरीके से लिखेंगे. अच्छा, अब let's suppose we take a homozygous dominant in the case of linked genes. So in this case, if we have a homozygous dominant, could you tell me what the genotype will be? Uh, capital B, capital T, Mhm. and then capital B, capital T again. So do you put both of these in brackets? Yeah, usually. Yes. So these are in brackets, and then capital B and capital T are in brackets. So what you showed with this is, a person who's going to read this is going to be like, अच्छा ये एक bracket है, मतलब ये एक chromosome को represent कर रहा है. This bracket is representing one chromosome, so this one chromosome has capital B and capital T. The other chromosome also has capital B and capital T. ये है homozygous dominant. अब let's try to draw this out and imagine something for a second. So capital B, capital B, capital T and capital T. Assume कि इस वक्त हम प्रोफेज 1 के स्टेज में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर एक दूसरे से स्टिक हो चुका है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह हो चुकी है, एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर स्टिक हो चुका है. एंड व्हाट्स हैपनिंग इज द आर्म्स ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर स्टिकिंग टू ईच अदर. क्रॉसिंग ओवर शायद हो सकती है, बट अगर क्रॉसिंग ओवर इस केस में होगी, इज इट गोइंग टू अफेक्ट द फाइनल एलील कॉम्बिनेशन? No, I don't think so. नो, बिल्कुल सही. व्हाई? क्योंकि लेट्स सपोज कि ये वाला एलील इस एलील में चला जाए, मतलब दिस गोज हियर एंड दिस गोज हियर, इट डज नॉट मैटर. कैपिटल भी यहाँ भी है और यहाँ भी है. अगर ये वाला यहाँ एंड ये वाला यहाँ चला जाता है, बिकॉज द आर्म्स ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड स्वैप पोजीशंस व्हिच इज क्रॉसिंग ओवर, इट डज नॉट मैटर. व्हाट इफ दीज आर्म्स स्वैप पोजीशंस यहाँ पे बाइवेलेंट बन जाए और यहाँ पे सिनेप्सिस का प्रोसेस हो जाए? Is there going to be a difference? No, because again, capital T and capital T. So, what you should remember is, if you are dealing with linked genes in dihybrid inheritance, तो homozygous dominant में you will not need to care about crossover, and another thing which we're going to talk about after this. So, homozygous dominant will not be affected by crossover. अच्छा, अब हमें ये तो पता है कि मायोसिस का प्रोसेस शुरू होने से पहले हमें करनी होती है डीएनए की रेप्लिकेशन. सो इफ आई कैन जस्ट ब्रिंग दिस राइट ओवर हियर, लेट्स ट्राई टू रेप्लिकेट द डीएनए फॉर बोथ ऑफ दीज. तो व्हाट्स गोना हैपन इज, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन और ये दूसरे क्रोमोसोम की. सो कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल टी कैपिटल टी. लेट्स टॉक अबाउट मेटाफेज वन. मेटाफेज वन में कौन सा प्रोसेस होता है, where there is a chance of something happening? What's that process called? Could you repeat? So in metaphase one, there is a chance of a process that may happen. What's that called? So example, prophase one में अगर crossing over है, what's the process called in metaphase one? Uh, like the bivalents, they used to like line up at the center.
लेकिन एक प्रोसेस होता था जिसमें द क्रोमोसोम्स कैन स्वैप पोजीशंस. डू यू रिमेंबर दैट concept? Yeah, I do. So what's the name of that? The Independent. independent assortment. बिल्कुल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मेटाफेज वन में देयर इज अ चांस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का प्रोसेस होने का. अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था कि ये वाला क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाए और ये वाला यहाँ पे आ जाए. सो टेक्निकली इफ यू इमेजिन अ सेल, वी हैव द टू सेंट्रियोल्स हियर, स्पिंडल फाइबर यहाँ पे, एंड दे पुल द क्रोमोसोम्स अपार्ट. If I swap the positions, is there going to be any difference? No. नो. तो अभी अभी हमने ये देखा कि क्रॉस ओवर की वजह से होमोजाइगस डोमिनेंट अगर होगा दिस गोना बी नो अफेक्ट और नो डिफरेंस. फिर हमने देखा कि होमोजाइगस डोमिनेंट अगर डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस और लिंक्ड जीन्स में होगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में भी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो क्या नया एलील का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा. नहीं बनेगा बिकॉज इट्स गोना बी द सेम थिंग. This is the exact copy paste of this chromosome. क्योंकि ये homozygous, sorry, this one, this is homozygous dominant. So always remember, homozygous dominant, linked genes, dihybrid inheritance, no crossing over, no independent assortment. अगर I'm not saying कि ये होगा नहीं, I'm saying कि अगर ये होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. There's gonna be no effect. So let's take an example on what inheritance in linked genes should look like in your exam. सो यहाँ पे हम पेरेंट्स के बारे में लिखते हैं. सो द फर्स्ट पेरेंट, लेट्स से ही इज टॉल एंड रेड. सो ये जो कैपिटल बी एलीड है, दिस कोड्स फॉर द. Okay, so I can just make two more examples. So ignore this. This is a separate example, and now I'm going to write a separate example. So I have the first gene coding for body height. So this is capital T and this is small t. Capital T जो dominant rate express करते that's tall, small t के लिए it is short. Then you have the second gene, and this second gene codes for body color. It has two alleles. It has capital R and small r. Capital R codes for a red color, and जो recessive trait है that is a white color. So in the case of the first parent, जो कि tall red है, could you tell me what the genotype could be? This is homozygous dominant, by the way. So think about it. Then it's gonna be capital T, capital R, and again capital T, capital R. Yeah. So about chromosomes, right? कि chromosomes में कौन सी chromosome में कौन सा allele होना चाहिए. That's what you've been thinking about, right? सर आपकी आवाज़ कट गई थी एंड Uh, थोड़ी सी दूर से आ रही है. yeah. So can you hear me now? Yeah, I can. Yeah. So when type, you would be thinking about कि कैसा क्रोमोसोम बनेगा एंड कौन से क्रोमोसोम में कौन सा एलील होगा. That's what you mean, right? Yeah. Yeah, so basically that's what basically मैं कहना चाह रहा हूँ कि that's what should be your ideal thinking process when thinking about the genotype in linked genes. तो यहाँ पे capital T capital R bracket में, capital T capital R bracket में. अब let's say we made this with a short white parent. अब this short white parent is homozygous recessive, completely homozygous recessive. So what do you think the genotype should be now? Small t, small r, and then small t, small r. Smaller, small t, smaller. अब यहाँ पे ना making the gametes is going to be really really easy. You could just draw it out. So for example, I have this allele right here. Sorry, I have this chromosome and this chromosome. This is capital T, capital T, capital R, capital R. And then यहाँ पे भी same चीज. You have small t, small r, and then small r. When we talked about the separation or when we talked about formation of gametes, gametes की formation का मतलब क्या था? कि one set of chromosomes are passed downwards to the offspring. Is that right? Yeah. One यहाँ पे this is one set of chromosomes, this is the other set of chromosomes.
So one set of chromosomes basically means कि या तो ये वाला चला जाएगा सेट या ये वाला सेट नीचे की तरफ पास हो जाएगा. So either case में it's obviously gonna be capital T and capital R. इस case में what's gonna be the gamete? Small t, small r. Small d, small r. So when you find out the offspring, what's the offspring, the genotype and phenotype going to be? Now this should be interesting. So think about it in the form of तो यहाँ से ये वाला chromosome All of them should be like capital T, capital R, and then small t, small r, I think. then what's the phenotype? And the phenotype is going to be tall, red. Tall and red. बिल्कुल सही. So this is what you could think of as a heterozygous क्योंकि यहाँ पे this is heterozygous for the first gene and heterozygous for the second gene. अब it is very easy to make an offspring in linked genes क्योंकि यहाँ पे हमें gametes की possible combination और fertilization के बारे में tension लेने की जरूरत नहीं है. We have the first chromosome, we have the second chromosome, just pair them together. Capital T, capital R, that's your first bracket. Small t, small r, that's your second bracket. So when you add them together, this is capital T, capital R, small t, small r. So 100%, as you said, सारे वो होंगे. So this is 100% tall and red. And this is heterozygous. तो यहाँ तक clear? यहाँ तक कोई confusion? No, it's clear. Okay. तो अनलिंक्ड में अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अनलिंक्ड और लिंक के बीच में डिफरेंस. सो व्हेनेवर यू हैड टू फिगर आउट द गेमीट्स इन एन अनलिंक्ड जीन्स you would do the brackets का expanding वाला process, right? Yeah. Yeah, so that's the FOIL method or the bracket expanding method which you would use to find out the gamete. If you want to find out the gamete for a linked gene, all you need to do is separate the two chromosomes. दोनों chromosomes में से कोई भी, for example, if they are the same, then it's only one set passing down. For example, if this was capital T capital R, yeah, capital T small r, so your two gametes are this and this. So all you have to do to find out the gametes is draw a line between the chromosomes. That's pretty much it. But unlink में थोड़ा सा मुश्किल होता है because you have to expand the brackets and then find the gametes. Okay, अब let's take an example. And this time we're gonna take an example जहाँ पे heterozygous parent को मेट किया जाता है with a homozygous recessive. और इससे हम एक concept को समझने की कोशिश करेंगे. So let me write this here. Dihybrid inheritance, linked genes. Okay, so first you have a heterozygous, and then a heterozygous is being mated with a homozygous recessive. Let me move this downwards ताकि ऊपर I'll write some information on what the genes actually are. Okay, so जो सबसे पहला gene है, this is the gene that codes for stem की, so this is basically in plants, stem की height क्या होनी चाहिए. और stem की height के लिए we have two alleles. सबसे पहला allele capital B allele, दूसरा small b allele. अच्छा, अब जो दूसरा हमारे पास जीन है, दिस कोड्स फॉर फ्लावर कलर, कि फ्लावर का कलर क्या होना चाहिए. तो यहाँ भी हमारे पास दो एलील्स हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. कैपिटल टी एलील इज द ब्लू कलर जिसके लिए कोड करता है, एंड स्मॉल टी रिसेसिव एलील, रिसेसिव ट्रेट विच इज ग्रीन कलर. कैपिटल बी कोड करता है फॉर टॉल एंड स्मॉल बी कोड करता है फॉर शॉर्ट. Now, if you are talking about a homozygous recessive, do you have to worry about any crossing over or any independent assortment? No. So you never need to worry about crossing over या independent assortment. We'll worry about it जब हम heterozygous की बात कर रहे होंगे. So यहाँ पे could you tell me what the genotype is going to be for the heterozygous parent? The genotype, right? So Yeah.
It's going to be capital B, capital T, and then small b, small t, I think. कैपिटल बी कैपिटल टी स्मॉल टी इसीलिए क्योंकि when we combine these two this becomes heterozygous and this also becomes heterozygous तो इनके जो phenotype होगा that would be tall and then blue is that right Yeah. okay अब could you tell me the genotype for a homozygous recessive and the phenotype ये जो parent है Small b, small t, small b, small t, and it's going to be a short green. small t small b small t oh sorry comma क्यों डाल दिया मैंने okay and then we're gonna have short and green क्या हम at this very moment गैमीट पता लगा सकते हैं होमोजाइगस रिसेसिव का Yeah, it's going to be like small b, small t. Simple, because all we have to do is draw a line between the chromosomes. अब क्या ये line हम हर दफा बना सकते हैं when we are talking about linked genes? No. You can only make this line because of the fact that you are not worried कि कोई independent assortment ना हो जाए, कोई crossing over ना हो जाए. If there is a even a 1% chance कि crossing over हो सकता है या independent assortment हो सकती है, जैसे कि we look at here in a moment, then हम line नहीं बना सकते in order to just separate out the brackets and then हम इसमें से gametes निकाल सकें. We can only do that when it is completely homozygous, या तो complete homozygous dominant या complete homozygous recessive. But that's where the problem comes, right? Heterozygous है. अब heterozygous में will crossing over an independent assortment affect the gametes? I don't understand. Could you repeat? तो ये अगर हेट्रोजाइगस है इस केस में क्या क्रॉसिंग ओवर की वजह से इज देयर अ चांस कि हम नए गैमीट्स बना सकते हैं या इज इट जस्ट गोना बी कैपिटल वी कैपिटल टी स्मॉल टी I think it's going to be the same. इट्स गोना बी सेम ओके तो मैं यहाँ पे चीज लिखता हूँ व्हिच इज वी आर गोना टॉक अबाउट नाउ कि व्हाट आर द गैमीट्स फॉर द हेट्रोजाइगस पेरेंट होमोजाइगस पेरेंट के लिए तो गैमीट्स निकालना बहुत इजी जस्ट ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द क्रोमोसोम जैसे कि हमने यहाँ पे किया था अब when we talk about heterozygous parent your answer is not really right कि gametes नहीं मतलब न्यू gametes नहीं बन सकते the reason is मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ so what is the first bracket or the chromosome capital B capital T अब do you agree कि meiosis से पहले इन दोनों की replication होगी so total में we now gonna have two chromosomes but each chromosome has two sister chromatids Yeah. right so that's what I'm gonna draw now capital B capital T. This is your first chromosome. And then what's the second one? Small b, small t. अब इस वक्त तक इनकी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुई. So that's what we're going to do right now. We're going to replicate them कुछ इस तरीके से. So ये हमने दो क्रोमोसोम्स बना लिए. हर क्रोमोसोम के अब दो सिस्टर क्रोमैटिड्स. लेट्स इमेजिन फॉर अ सेकेंड कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है. What was crossing over? Okay, the arms of the sister chromatids of different chromosomes swap with each other. So this is the arm of the sister chromatid of the first chromosome. This is the arm of the sister chromatid of the second chromosome. अगर ये swap करेंगे तो नया एलील का कॉम्बिनेशन ही बन जाएगा. So let's say if they swap right now, I'm going to write down what the result is going to be. Capital B, capital D. ये as it is आ गया. Now it's gonna be small b capital T, here capital B small t and then small b small t. क्या difference नहीं आ गया यहाँ पे compared to this and this? Yeah, is it too confusing right now?
Assalamu alaikum. Can you hear me? Yeah, I can hear you. I can fine. Yeah, I'm so sorry again. The laptop issue. Oh, laptop issue. Okay. Is it visible? Yeah, it's visible. Okay. So what I'm gonna do is I'm just gonna x 1 second. मेरा भी अब glitch करना शुरू हो गया है. Okay, yeah. I'm just gonna wrap up this topic क्योंकि I have another class at 9 o'clock. उसके बाद हम इसको अगली क्लास में यहाँ तक डिस्कस करेंगे. But I just want to finish this point. This is really really important. मैं कह रहा था ये कि लेट्स सपोज हमारे पास ये जो पॉसिबल जीनोटाइप है, राइट? तो हमने ये जीनोटाइप को ड्रॉ किया. मायोसिस वन से पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगी, करेक्ट? Yeah. तो ये कैपिटल बी कैपिटल टी वाला ये जो क्रोमोसोम है, ये भी रेप्लिकेट होगा और ये वाला भी होगा. सो कैपिटल बी कैपिटल टी बिकम्स टू नाउ, क्योंकि दो सिस्टर क्रोमैटिड्स आ गए एक क्रोमोसोम में. एंड द सेम केसेस फॉर स्मॉल बी स्मॉल टी. नाउ लेट्स इमेजिन कि क्रॉसिंग ओवर होती है. क्रॉसिंग ओवर क्या था? द आर्म ऑफ द वन सिस्टर क्रोमैटिड जो कि एक क्रोमोसोम में है is swapping with the arm of the other sister chromatid जो दूसरे क्रोमोसोम में. तो मतलब ये एलील और ये एलील प्लेसेस स्वैप कर रहे हैं, प्लेसेस स्विच कर रहे हैं. अगर ये प्लेसेस अब स्विच करेंगे, doesn't that create a new allele combination? Could you repeat? Your voice was lagging. हाँ, तो जब ये दो एलील्स प्लेसेस को स्विच करेंगे, क्या इससे नया एलील कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा? Yeah. नए एलील कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा. बट इफ यू हैड टू टॉक अबाउट होमोजाइगस रिसेसिव, लेट्स से आई कैन ड्रॉ होमोजाइगस रिसेसिव राइट नाउ. दिस इज स्मॉल बी स्मॉल टी. अब डीएनए रेप्लिकेशन होगी, सो यू हैव अनदर स्मॉल बी स्मॉल टी एंड स्मॉल बी स्मॉल टी. अगर ये वाला आर्म और ये वाला आर्म सिस्टर क्रोमैटिड का पोजीशन स्वैप करेंगे, इज देयर गोना बी एनी डिफरेंस? नो, राइट? देयर No. गोना बी. Yeah, there won't be any difference. So this is what I was saying earlier. Okay, if the genotype, and this is very very important, if the genotype is completely homozygous मतलब कि पहला जीन भी होमोजाइगस है और दूसरा जीन भी होमोजाइगस है. अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि होमोजाइगस डोमिनेंट है या रिसेसिव है, कुछ भी हो. बट इफ द जीनोटाइप इज completely homozygous, we do not need to be worried of crossing over. कि क्रॉसिंग ओवर अगर हो गई तो एलील कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर अगर होगी भी, हमने अभी अभी देखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड नंबर टू, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि हमने पहले देखा था, इवन इफ दैट हैपेंस इट्स नॉट गोना मेक एनी डिफरेंस. लेकिन हेट्रोजाइगस में वी नीड टू वरी अबाउट इट कि यहाँ पे तो क्रॉसिंग ओवर भी हो सकती है विच विल चेंज द एलील कॉम्बिनेशन, एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हो सकती है जिससे एलील कॉम्बिनेशन दोबारा चेंज होगा. सो इन दो प्रोसेसेस की वजह से एलील कॉम्बिनेशन किस तरीके से चेंज होगा, हम इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे. सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट वी गोना डू इन नेक्स्ट क्लास? जो टास्क है हमारा, Yeah. ये तो सिर्फ हम ये देखेंगे कि दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, कि अगर लिंक जीन्स और डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस में हेट्रोजाइगस है, मतलब इट्स नॉट कंप्लीटली होमोजाइगस, इट्स हेट्रोजाइगस, तो फिर क्रॉसिंग ओवर या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से एलील कॉम्बिनेशन और गैमेट्स जो प्रोडक्शन होती है उसमें चेंज कैसे आएगा. एंड ऑब्वियसली अगर गैमेट्स में चेंज आता है तो ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप में कैसे चेंज आएगा. राइट, सो एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट्स अंटिल हियर? No, it's clear. Okay, so could you give a summary of what we did today? Right. So basically, today we talked about linked genes, and we did some examples of epistasis, and we also practiced some process on like linked genes, and that basically we can also call it like also autosomal linkage. Yeah. Right. Okay. And let me just And ask you. and yeah.
Yeah, I think that's pretty much it. Yeah. Okay, Yeah. और फिर हमने ये भी देखा था कि लिंक जीन्स में क्रोमोसोम्स को सॉरी जीनोटाइप को लिखते किस तरीके से हैं एंड इन विच केसेस इज क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बीइंग अफेक्टेड और नॉट बीइंग अफेक्टेड राइट ओके सो अच्छा हमारी क्लास थर्सडे को है राइट नेक्स्ट क्लास Yeah, it is. या इंस्टेड ऑफ थर्सडे फ्राइडे को यू आर्ट सो कैन वी हैव इट द सेम टाइम सैटरडे नाइट Yeah, sure. Okay. Oh, okay, so I'll just mark you up on my schedule for Saturday. Because Thursday ko my sister's birthday, I have to be outside, so I won't be able to make it. Yeah, it's fine. Okay. Okay, thank you. Thank you. Love you.